हेलो एवरीवन। जो अपना मोबाइल दिया। यस बेटा। तो अच्छे से दिखाई दे रहा है ये। ओके। गुड इवनिंग। तो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। आज जो है हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स, ठीक है ना। लास्ट टाइम हमने किया है कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। तो मैं थोड़ा सा आपको एक बार फिर रिकैपिटुलाइज कर लेता हूं कि जो सिंपल क्यूबिक है, एक मिनट बेटा। ओके। अच्छे से दिखाई दे रहा है ना, और सुनाई भी दे रहा है। यस बेटा। अच्छे से दिखाई दे रहा है। मुझे तो सुनाई दे रहा है। ओके डन। गुड इवनिंग। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूं कि जैसे क्यूबिक सिस्टम है, क्यूबिक जो सिस्टम है उसमें तीन तरह के ब्रेविज लैटिसेस होते हैं। तो पहले आप आंसर दो कि जो क्रिस्टल सिस्टम है, हाउ मेनी क्रिस्टल सिस्टम्स आर देयर। यस बेटा। क्रिस्टल सिस्टम्स कितने हैं, टोटल क्रिस्टल सिस्टम्स, हाउ मेनी क्रिस्टल सिस्टम्स आर देयर। तो देयर आर टोटल 7 क्रिस्टल सिस्टम्स। कितने हैं? 7 क्रिस्टल सिस्टम्स हैं। और ब्रेवेज लैटिसेस कितने हैं?
Yes beta, how many Brevis lattices are there? क्रिस्टल सिस्टम कितने बताए मैंने आपको? 7 और ब्रेविज लेटिसेस 14। उसमें क्यूबिक जो सिस्टम है उसमें 3 तरह के ब्रेविज लेटिसेस होते हैं, 3 तरह की वेरिएशंस होती है। एक सिंपल क्यूबिक, दूसरा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और तीसरा जो है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो इतने यूनिट सेल्स होते हैं, ठीक है ना। टोटल 3 तरह के यूनिट सेल्स हैं इन क्यूबिक सिस्टम, ठीक है ना। हाँ, वेरी गुड। सो 14 ब्रेविज लेटिसेस एंड 7 क्रिस्टल सिस्टम्स। तो अब पहला जो क्रिस्टल सिस्टम है दैट इज सिंपल क्यूबिक, मतलब क्रिस्टल सिस्टम का, क्यूबिक सिस्टम का यूनिट सेल। तो सिंपल क्यूबिक जो है, जिसको हम और क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल, उसमें जो एटम्स होते हैं दे आर ओनली एट द कॉर्नर्स। कहां होते हैं एटम? सिर्फ कॉर्नर्स पे होते हैं। और ईच कॉर्नर इज शेयर्ड बाय हाउ मेनी यूनिट सेल्स? हर कॉर्नर जो है कितने यूनिट सेल शेयर करते हैं? यस बेटा, तो ईच कॉर्नर इज शेयर्ड बाय 8 यूनिट सेल्स। सो इसलिए z जो आता है दैट इज 8 by 8, दैट इज इक्वल टू 1। मतलब नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल जो है, ईच कॉर्नर इज शेयर्ड बाय 8 यूनिट सेल्स, ईच फेस इज शेयर्ड बाय 2 यूनिट सेल्स, ईच एज इज शेयर्ड बाय 4 यूनिट सेल्स, और जो इनसाइड होता है दैट इज शेयर्ड बाय ओनली 1, जिसके साथ वो बिलोंग करता है। तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। इसलिए सिंपल क्यूबिक के लिए z आता है 1, और BCC दैट इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, in body centered cubic unit cell there are atoms at the corners. So in addition to the atoms at the corner there is one atom at the center of the unit cell. बॉडी के सेंटर में एक यूनिट सेल होता है, इसलिए Z फॉर BCC। तो कॉर्नर एटम, as I told you, it is shared by 8 unit cells, that's why it is 8 by 8, and atom inside the unit cell that is not shared by any other unit cell, that belongs to only the same unit cell, only one contribution is there, that is not shared by any other unit cell, and that's why Z for BCC comes out to be 2. And then come to FCC. So in case of FCC, में in addition to the atoms at the corners there are atoms at the center of the faces, center of each face. And how many faces are there? Total faces are 6 in a cube. So Z for FCC is corner atoms, each corner atom shared by 8 unit cells, divided by 8, that's why, and 6 faces, each face is shared by 2 unit cells, so 6 by 2,
So total comes out to be 4. So number of atom per unit cell in FCC are 4. So that's the story we have done before. This is the revision of the previous lecture. Now come to next part. In a cube, or we can say in cubic system, rather we can say cubic crystal system. In a cube, there are 8 corners, and contribution of each corner atom is 1 by 8. There are 6 faces, and contribution of each face atom is 1 by 2. There are 12 edges. Keep in mind there are 12 edges in a cube, and each cube edge is shared by 4 unit cells, 1 by 4. So let's have one cube. One second. Let's say we have this. In this case, this one. These are 1, 2, 3, and 4. These are the corners. 4 corners here and 4 corners below. So total 8 corners. Faces 1, and at the back 2. This one 3, and other side 4. Above face 5, and below 6. Total 6 faces. And edges. These are the edges. See, 1 edge, 2, 3, and 4. 4 edges, 4 above, 1, 2, 3, 4. 4 edges, same 4 edges below. So total 4 plus 4 and plus these vertical 4s. So total 12 edges. This is the way to calculate, okay? Understood? If you find any doubt, please do ask. Is it okay? Shall we continue? यहाँ तक कोई डाउट है बेटा? So let's have question from previous year. Like if we have compound made up of 2 atoms A and B. Okay. A atoms occupy the corners of the cube, and B atoms occupy the centers of each face. So what is the formula of the compound? What is the formula of the compound? There are 2 atoms only. A atoms occupy the corners of the cube, and B atoms occupy the center of each face. So what is the formula of the compound? Yes. Can you do it? Yes, beta. Let's do it together. First, A atoms, they are at the corners, and you know
In a cube, how many corners are there? There are 8 corners, and each corner is shared by 8 unit cells. So number of A atoms sorry, per unit cell, that is 1, 8 by 8, and number of B atoms per unit cell. Now B atoms are at the center of each face. Now how many faces are there? There are total 6 faces in a cube, and each face atom is shared by 2 unit cells. So it is 6 by 2. That means it comes out to be 3. So formula of the compound we have to calculate like this. Just calculate the ratio. A is to B is 1 is to 3.